So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss about Delhi pollution. I hope you can see on the thumbnail, and it has been very much in the news. And what is GRAP? In fact, recently, I think in ALET exam, if I'm not wrong, or in SLAT, I think somewhere, recently we have seen some exam where they asked the full form of GRAP. That is Graded Response Action Plan. And CAQM, that is Commission for Air Quality Management, is the organization which is supposed to control these pollutions in Delhi NCR region. So we will be discussing about it. So we will begin our class by discussing the reasons for Delhi pollution. क्या कारण है कि दिल्ली में इतना pollution है, and specifically the reasons why it happens in cold, especially after like from October to December. Why only in this region, है ना? एक तो हम लोग ये जाने कि दिल्ली ही में इतना ज्यादा मतलब दिल्ली के आसपास इतने ज्यादा पॉल्यूशन क्यों होते हैं, और दूसरा खास कि जब अक्टूबर के बाद से यानी ठंड के दौरान अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द ईयर्स, है ना? तो वो भी हम लोग जानेंगे. सम सॉर्ट ऑफ लाइक ज्योग्राफी विल बी डिस्कसिंग. Then we will discuss about the GRAP, full form, etc. And then we will discuss the establishment of CAQM, the bill regarding it. Then we will little bit discuss about CPCB also, Central Pollution Control Board. तो ये हमारा शुरुआत रहेगा, right? I think I'm audible, visible. Everything is fine. It's about CPCB. Yes. हाँ, Krishi Sasdeva is getting you are audible. Thank you. हाँ. So let us begin. Okay. So शुरू करते हैं. And since this is now for those who are attempting next year, so I'll go little slow. ठीक है, धीरे धीरे हम लोग discuss करेंगे because of course now we are having new students coming. So let us move on. So first of all, we have to understand the location also. Geographical location also plays a very important role. So where is Delhi? है ना? So Delhi में अगर आप like I'm sure you must have heard, we say like these are being taught in the school days also, that Delhi mein we are having extreme temperatures, right? So like cold is also extreme and summer is also extreme as compared to if you are living in coastal region, let's say in Mumbai, है ना? If you are currently in Mumbai, I think you don't need so many jackets, but if you are in Delhi, you need multiple sweaters and jackets while moving out, right? तो उसका कारण वन रीजन इज एक्चुअली बिकॉज इट इज एक्चुअली कॉन्टिनेंटलिटी, या आप ये समझ लो कि इट इज एक्चुअली इनसाइड द कॉन्टिनेंट. आई वुड से नॉट नियर द सी और ओशन, है ना? सो बिकॉज ऑफ विच वी सी एक्सट्रीम कोल्ड एंड समर. Yes, very good, Krishi Sasdeva. हाँ, Mumbai is near Ocean Arabian Sea, so and whenever we have a huge water body, it has moderating effect. गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, ठंड बहुत ज्यादा भी ठंड नहीं पड़ेगी. Okay, so it has moderating effect because I am sure you must be aware. These are taught in the school days when you are taught land breeze and sea breeze. These are taught, है ना? Specific heat of water is more than specific heat of land, है ना? What is the meaning of this? हाँ, थोड़ा बेसिक चीज है कि पानी ठंडा और गर्म देर से होता है, लेकिन जमीन फौरन ठंडा होती है, फौरन गर्म होती है ना. सो वाटर टेक्स मोर टाइम टू गेट वार्म एंड हीटेड, राइट, एज कंपेयर टू द लैंड. एंड वो सारी बात फिर वहीं पर पहुंचती है कि मॉडरेटिंग इफेक्ट, राइट? सो एक चीज, so generally speaking when we talk about temperature extremes, we can witness more in Delhi region, in this central India region, and Delhi and NCR region as compared to the South India or coastal regions. ठीक है, फर्स्ट थिंग. एक तो ये बात होगी. दूसरी बात ये कि ऑफ कोर्स द चांसेस ऑफ polluted air getting trapped is high here. Okay, है ना? We will discuss about temperature inversion, किस कारण से होता है, we will discuss it, है ना? But of course when you are in coastal areas, ये सब region में हो, so of course it can the polluted air can move, है ना? So pollution, like trapping of air comparatively is lesser, है ना? So that is why you will see more temperature, like more pollution in this region. And now there is a term called as smog also, which is actually smoke plus fog.
Okay, so smoke is again the pollution element, the element of the pollution, and fog is related with what we call it as cold region. And I'm sure if you're living in this region of India, you were witnessing a strong cold. Anna. Again, the continentality, or I would say it's away from the water body. That's why you will feel more cold in this region. And of course, here is Himalayas also, and there are multiple such reasons. But if you are living in coastal region, I'm sure you would have not like by this time like the cold wouldn't have been much higher. Like thoda bahut thand hogi, like, but it is bearable, right? And that's the idea behind this. So first thing about temperature and cold we have discussed. Now let us discuss about some more common discussion. We will keep on discussing about the reasons. Another reason is, of course, Delhi has one of the highest vehicle densities. Cars बहुत ज़्यादा हैं दिल्ली में. Much more cars and other vehicles. ठीक है? As compared to other cities, है ना? Mostly like उसके बाद मुंबई वगैरह भी है cars, but generally speaking, as compared to other South Indian cities or other cities, like Delhi has huge number of vehicles. So that is also one of the reason. The next is, of course, industrial power plant emission. Again, the same thing. देखो, अगर आप देखोगे, like Badapur power plant and those regions are very famous. Gurgaon is famous for that, and now we call it as Gurugram. So again, जैसे initial days when British came and they established factories in Mumbai and around it, तो Mumbai के around, Ahmedabad के around. But again, you will see actually ocean near it. यहाँ पर कोई ocean वगैरह है नहीं. तो दिल्ली के आसपास ना बहुत सारे cities हैं. I'm sure you must be aware, like Gurugram, है ना? You will find Manesar, we are having Maruti plant, and many other plants are there. Not only that, Ghaziabad, you will find a lot of factories. Yes, Krishi Sandeva, we are coming to that western disturbance. Yes, huh. Then many other factories are actually in this region, Faridabad, Dawad, and etc. Okay. So, एक कारण, that is another reason for what we call it as industrial power emission, etc. हाँ. कभी कभी क्या होता है, since Rishi Sachdeva is writing, I'll talking about this. यहाँ पे मेडिटेरियन सी से एक विंड आती है, that's what we call it as western disturbance, है ना? वो दिसंबर वगैरह के आसपास होता है ना? That also sometimes bring, कभी कभी रेनफॉल भी ले आती है वो, but of course sometimes it brings dusty or dirty, I would say polluted winds also. That is all, can also be the reason. Yes, there is multiple reason for that, है ना? Then of course construction, road, dust activities, of course that is also the important thing. So the construction activities होती है Delhi NCR में, we are having huge number of construction activities, है ना? That also becomes the reason for the pollution. Now, can you please tell me, we are talking about these terms, PM 2.5, PM 10. So this is nitrates, these are nitrogen oxides and carbon monoxides, etc. But what is PM 2.5? Can anyone tell me? What is PM 7.5? What is PM 10? These remains in the news. ये सब अक्सर न्यूज में आता है. कोई बता सकता है what is PM 2.5? Particulate matter 2.5. What is the meaning of this number? 2.5. Which is the most deadly? PM 2.5, PM 7.5, PM 10. सबसे deadly कौन सा है? So PM 2.5 means PM मतलब particulate matter, okay? Particulate matter. तो ये जो 2.5 है, या PM 7.5 या PM 10, what is? I'm explaining. We are coming to that. हाँ बता रहा हूँ. The most deadly is the smallest it is, the more deadly it is. PM 2.5 is more dangerous than PM 7.5 than PM 10. सबसे खतरनाक वो है जो सबसे छोटा है. देखो, PM 2.5 means कि जो particle, मान लीजिए dust particle है, this I am making it, ये बड़ा सा dust particle, like it's very small, but just for understanding purpose. The diameter of it is 2.5 micrometer, which is 2.5 into 10 to the power minus 6 meter. This is called as PM 2.5. ये इसका मतलब हुआ 2.5 into 10 to the power minus 6 meter. ठीक है, और PM 7.5 उससे बड़ा हो जाएगा, PM 10 उससे ही बड़ा हो जाएगा. So PM 10 means 10 into 10 to the power minus 6 meter. So the smaller it is, the more dangerous it is. Why? Because it can enter inside your nose and goes inside the lungs. फेफड़ा के अंदर चला जाएगा. It's hard to filter out. Of course, even in the nose also it cannot be filtered. There are nose hairs which filters the pollution dust. But of course, PM 2.5 can go inside your lungs. And that is why it is considered as the most deadliest one. सबसे खतरनाक उसी को माना जाता है. इसीलिए that's why whenever you see they calculate, specifically they calculate PM 2.5.
जहां भी पॉल्यूशन वगैरह कैलकुलेशन होता है PM 2.5 जरूर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है. दैट्स व्हाट यू शुड नो. यस, वेरी गुड कृषि सचदेवा. Now, another reason which actually was very much in the news for the past many years, and there have been a lot of like political controversies also regarding it. It is called as stubble burning. We'll discuss about it, but the good or the positive thing is we have seen reduction in stubble burning in Punjab, Haryana regions. So what exactly it is? Let me show. Dekho, this is Delhi. Okay, first please tell me, rice is a kharif crop or rabi crop? You understand what is kharif crop, rabi crop? आपको कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप समझ जाओगे कॉन्सेप्ट. राइस इज अ खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप? खरीफ क्रॉप, हाँ. मतलब खरीफ क्रॉप इज एक्चुअली सोन इन समर, ना मतलब सोन इन अराउंड जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर नवंबर अराउंड, नवंबर के आसपास. ओके, हार्वेस्टेड मतलब धान काटा था, पैडी जिसको कहते हैं वही राइस को. तो जब धान काट दिया जाता है तो ऐसा कुछ बचता है. तो होता क्या है, when let's say the rice is cut in November, और ये चावल है, I'm just giving example. Okay, this is the rice. Now इसको काटा गया, when it is cut, तो नीचे का थोड़ा सा हिस्सा ऐसा बच गया. It is very difficult to cut. This is called as stubble. थोड़ा सा बच गया ऐसा. You have to remove these things so that you can sow again for the rabi season in November, December. Sowing happens in November, December. ठीक है, जो हाँ पराली हिंदी में कहते हैं. तो जो आपने धान यानी वही जो चावल उगाते हैं धान, उसको काट दिया तो थोड़ा थोड़े नीचे का बच गया, उसको काट के हटाना बहुत मुश्किल होता है. उसके लिए शायद हैप्पी सीडर मशीन वगैरह आती है, हैप्पी सीडर आई थिंक, है ना. देयर इज सम मशीन लाइक दिस, है ना. सो सबके पास नहीं होता है तो लोग करते क्या, थोड़ा थोड़ा बच गया तो जला दो. दैट्स द बेस्ट शॉर्टकट, राइट. बर्न इट so that all this stubble will be removed and then they can again start farming for the rabi season. हाँ, अब इसमें होता क्या कि when you are burning it again, I'm telling you क्या होता है. मान लो let's say because Punjab and Haryana, I'm sure you must be aware, famous for green revolution etc. अगर यहाँ पे बर्निंग हो रही है तो यहाँ से हवा एयर उठेगी. And I have told you that western disturbance comes like this from Mediterranean Sea in November December region. तो ये हवा इधर लाएगी and of course it actually impacts Delhi. हाँ, it also degrades soil etc. तो जो एयर पोल्यूशन जो उससे होता था, जो चावल स्टबल बर्निंग जो पैडी में बच जाता था, उसके हिस्सा जो स्टबल होता है पराली, वो जलता था और दिल्ली की तरफ आता था, काफी पोल्यूशन होता था. अगेन वही सेम रीजन, नवंबर दिसंबर वाले रीजन. So another reason why we have more pollution in summer, it was because of this. Because at that time around November the rice was harvested. उसको काटा जाता था ना उसको पैडी को, और जो फिर उसका हिस्सा बचता उसको जला देते ताकि दिसंबर में, so that they can sow for rabi crop, है ना. वीट, गेहूं वगैरह, वीट इज एक्चुअली द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप, है ना. तो लोग चाहते थे कि अब रबी दोबारा लगाए तो उतना टाइम नहीं बचता था, तो जल्दी में काटते थे लोग, है ना. और ही बहुत सारे रीजन. हाँ, तो इसमें अब देखो हुआ क्या, रिसेंट ईयर्स वी हैव सीन एक्चुअली रिडक्शन इन स्टबल बर्निंग. These were some of the reports. Contribution of farm fires in Punjab, Haryana to pollution, Delhi NCR episodic say center. बहुत ज्यादा भी नहीं है. This can be one of the reason, but that is not the only reason. है ना, सारा ब्लेम इसको देना सही नहीं होगा, है ना, maybe, है ना. CAQM Commission for Air Quality Management notes biggest drop in farm fires in Punjab and Haryana since 2018. है ना. तो ये 2025 की रिपोर्ट. इन्हें 2018 से लेकर 2025 तक, अगर आप 2020 को इग्नोर कर दो तो सबसे ज्यादा ड्रॉप हुआ है. मतलब बॉटम लाइन है कि yes, we are witnessing the decline in farm fires or stubble burning in Punjab and Haryana in the last few years. ठीक है, ऐसे समझ सकते हो. And as the Commission for Air Quality Management issued a statement of substantial reduction in farm fires in Punjab and Haryana. ठीक है, हाँ, yes, कृषि सचदेवा, yes, right, हाँ. So we are done with this. है ना. फिर एक दो और लॉज भी थे. पंजाब में ने कुछ लॉज बनाए थे कि जैसे एक पर्टिकुलर डेट, मान लो जून के बाद से यू कैन सो द राइस. Because what people do is they if you start doing March April में, तो they used a lot of irrigation. Like तो होता क्या, राइस जो है ना बहुत सारा पानी चाहता है, huge water चाहिए उसको. And the farmers start sowing, let's say in March or April only,
before the arrival of monsoon, they will use a lot of irrigation. So it requires a lot of electricity, plus it will deplete groundwater. तो गवर्नमेंट ने क्या, पंजाब गवर्नमेंट ने कि they made laws है ना related with this, that after a certain date, let's say after 1st June, you are supposed to sow the rice, not before that. Okay, why? Because so that water should not be wasted unnecessary. तो अब हुआ क्या कि मान लीजिए जून या जुलाई में सो किया गया, तो अब अक्टूबर नवंबर आपको फौरन काटना है. You don't have, you cannot wait, right? So when you have to cut faster, in that case the farmers were in a hurry because they have to just go for, in December they have to go for rabi crop. So हरी में भी वो लोग जला देते थे, since they were in hurry. So okay, चलो जला दो, कौन काटेगा हटाएगा. So whatever the remains are left, let's burn it quickly and let's start with the rabi crop. So वो सब भी reason हुआ करता था. So but now with like we are seeing the decline according to different reports, we are witnessing the decline of stubble burning in Punjab Haryana region. ठीक है, तो ये बात हो गई. और क्या क्या बात थी, ये हो गया. वी आर डन विद दिस. पॉपुलेशन, यस पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. हाँ, सीजनल मेट्रोलॉजिकल, ये इंपॉर्टेंट है. विंटर, रीजन व्हाई, अनदर रीजन व्हाई इट हैपेंस इन कोल्ड, है ना. जो ना बोल रहे थे ठंडी में क्या होता है, ये सारी बातें. तो एक तो रीजन हो गया कि स्टबल बर्निंग वही अक्टूबर नवंबर में ही होगा, क्योंकि धान कटता ही उसी वक्त है ना. वन ऑफ द रीजन. अनदर ऑफ टोरियस स्मॉग है, तो फॉग के साथ ठंड है, तो ठंड है. और कॉन्टिनेंटलिटी मतलब दिल्ली जो है अंदर मतलब कोस्टल एरियाज में नहीं है, दैट इज आल्सो द रीजन. बट कोल्ड में होने का अनदर रीजन है टेम्परेचर इन्वर्जन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल हाउ टेम्परेचर इन्वर्जन हैपेंस, बट you should know the basic geography behind it. तो देखो थर्मल इन्वर्जन एश टू द सफोकेशन इन दिल्ली, वो लॉक कर देता है. देखो, दिल्ली डज नॉट जस्ट मेक पॉल्यूशन, इट स्टोर्स इट. विंटर लॉक्स द लिड. ढक्कन की तरह काम करता है. डब्बा का ढक्कन होता है ना, बिस्किट के डिब्बा का ढक्कन. सो ढक्कन की तरह काम करता है. ए लिड है, ढक्कन है ना. दैट लिड एक्चुअली ब्लॉक्स द एयर फ्रॉम कमिंग आउट और पॉल्यूटेड एयर. देखो क्या होता है ये बताते हैं. पहले आपने, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस? Yes, we'll talk about that. Are you aware of this? What we call it as, we have layers of atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. In troposphere, when you go up, the temperature decreases. ये पता है? यहाँ देख लो, ये वाला, बस ये वाला देखो. In troposphere, if you go up, the temperature will get cool. देखो नीचे जा रहा है, कम की तरफ जा रहा है. Yes, but after troposphere it gets hot because of ozone layer. Then again it gets cool. Then thermosphere में ions वगैरह होते हैं, ionosphere, that's why it get warm. तो हम लोग अभी सिर्फ इसकी बात करें, because all the geographical phenomena, all the formation of cyclone, clouds, everything happens in troposphere. ठीक है, so let's talk about troposphere. बाकी सब भूल जाओ, let's forget others. We are talking about here. If I say that if I go up, the temperature will decrease, it means I will see cool here. So this is, here it will be cool, here it will be warm. So I'm talking within the range of troposphere. Yes, ठीक है. This is called as normal scenario. So this is normal scenario. Here it is warm and here it is cool. Again, we are talking in the range of troposphere के अंदर बात हो रही है. We are talking within the range of. Yes. The left one is a normal case. Now in cold, the reverse happens. यहाँ cold है, यहाँ भी cold हो जाता है. Okay. और बीच में warm होता है. तो what will happen? What will happen is the polluted air gets trapped inside it. Okay, because of temperature inversion. ठीक है, why temperature inversion happens? It happens in mountain valleys में भी काफी होता है temperature inversion, ठंड में भी होता है. We are not going in that detail. ठीक है, since here the temperature ideally, देखो अगर आप जो है यहां से यहां जाओगे, you will witness cool temperature, but if you go from here to here, you will feel warm temperature, which is the opposite. This is called as temperature inversion. Okay, and because of which, of course, when this is colder than this, so it will descend. Colder air descends and warmer air rises, right? So इसको ट्रैप कर देता है. अब होता क्या है, कोई भी polluted air pollution हो, यहीं पे फंसा रह जाएगा. It will not go up. All the pollution will be get trapped here. So the answer is because of temperature inversion, all the pollution gets trapped and it does not go up. So ये होता है विंटर में. ठीक है, सो अनदर रीजन है ना. तो ये क्या ढक्कन की तरह काम कर रहा है, लिड लगा दिया, लिड. यस, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. देखो आर्टिकल में क्या लिखा है, इट स्टोर्स इट एंड विंटर लॉक्स द लिड.
दिल्ली पॉल्यूशन करते ही नहीं है, पॉल्यूशन के बाद फंसा देते हैं लोग, इन्वर्जन के बाहर नहीं निकल रहा है, क्या लिखा होगा, यस, ठीक है, यू कैन रीड इट। सो मतलब ढक्कन, जैसे बिस्किट का डब्बा का ढक्कन तो बंद कर दिया तो बाहर नहीं निकलेगा, है ना। सो इन द सेम वे एक्चुअली इट बिहेव्स, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वन ऑफ द रीजन। तो हम लोग कहाँ पे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर इन्वर्जन, है ना। सो आई होप इट इज क्लियर, बेसिक आइडिया शुड बी देयर, उतना डिटेल भी नहीं जाना है। अच्छा, इन सब में से कौन से लेयर में ओजोन लेयर होता है? वी हैव सीन सम क्वेश्चन इन स्लैट रिसेंटली, someone had commented me also, that's why we are discussing about that as well. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, where will I find ozone layer? Somewhere here, stratosphere में ओजोन लेयर मिलता है, ठीक है। And around 1980s, we have seen ozone layer depletion happening, and because of which a convention or a protocol was signed. What is that protocol called? We have seen question in SLAT recently, and one of my students wrote in the comment section, said that you taught me, and it we got the benefit for that. Which protocol was there to protect the ozone layer? Because ozone depleting substance, ODS, was very much in the news. Ozone depleting substance like chlorofluorocarbon, hydrochlorofluorocarbon. Yes, Montreal Protocol, not BBNJ. BBNJ तो biodiversity beyond natural jurisdiction, वो समुद्र हाई सी से रिलेटेड है. Montreal Protocol, Montreal is actually a place in Canada, है ना. 16 September 1997. This was signed. So 16 September is celebrated as World Ozone Day, World Day of Ozone Protection, whatever you can say. Okay. So yeah, Montreal Protocol, Montreal is actually a place in Canada, and it is considered as one of the successful environmental treaties. Okay. ठीक है, आगे चले. सो वी आर डन विद दिस विंटर इन्वर्जन. मैंने आपको बता दिया कि ढक्कन की तरह, लेड की तरह काम करता हो, है ना. दैट इज व्हाट यू शुड नो. तो ये दिस आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट यस्टरडे. ये मैंने कल लिया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. बाय द वे, हु इज द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट? कैबिनेट मिनिस्टर. व्हाट इज द नेम? उनका नाम क्या है बताइए. हाँ, O प्लस O2 इज ओजोन. हाँ ठीक, ये बताइए. Who is the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change? Yes, Mr. Bhupendra Yadav. ठीक है, ओके. अब देखो, जो इंडिया में जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, विच इज कैलकुलेटेड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दे टेक इनटू अकाउंट विच डेटा. सो सबसे पहले PM 2.5, हमने आपको बताया द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दिस वन, है ना. देन दे टेक इनटू अकाउंट PM 10, फिर NO2, है ना. सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना. देन अमोनिया, देन सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन. ओजोन इज O3. अच्छा, इसमें ध्यान दीजिएगा, दे डू नॉट टेक इनटू अकाउंट कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, यही सब कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं. दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट बाय सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना. देखो ऊपर लिखा है NAQI, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स. ठीक है, सो ये सब कैलकुलेट करते हैं by taking into account all these 7 parameters. They come up with air quality index, है ना. तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, लिखा ना नेशनल एयर, तो AQI वहीं से निकला, एयर क्वालिटी इंडेक्स. ठीक है. सो आइडियली सबसे अच्छा है कि इट शुड बी बिटवीन 0 to 50, बट आई थिंक दिस इज अ ड्रीम इन दिल्ली. दिल्ली में अगर ये हो गया तब तो ड्रीम ही एक तरह से, है ना. But at least right now, like October, November, December, it's very difficult to believe that we can have this. And 51 to 100 is satisfactory. अच्छा, इस लैट के मार्क में आया था क्या? Which of the following is not a parameter? Oh, great. ठीक है, तो satisfactory. ठीक है, 100 to 200 moderate, 200 to 300 poor, 300 to 400 very poor, and 400 to 500 severe. And I was just checking it. ये वही उन्हीं से निकाला. 407 आनंद विहार में, 407 means they were rare, severe category में था. Affects even healthy people.
and seriously impact with existing disease. ओके तो यही सब ध्यान रखिएगा और अपना ख्याल रखिए. इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली प्लीज वियर द मास्क एंड कम आउट ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड, है ना. प्रोटेक्ट योर लंग्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो यही चीज है ना. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. देखो ये यस्टरडे का है ना, संडे. अच्छा ये संडे 21 दिसंबर का दिखा रहे हैं, ठीक है. आई थिंक आई टुक द स्क्रीनशॉट यस्टरडे ओनली, है ना. Now let's talk about CPCB. Now can anyone tell me Central Pollution Control Board will be what? A statutory body? A constitutional body? Neither statutory nor constitutional. कहाँ आएगा? कौन से कैटेगरी में आएगा? And what is the meaning of statutory body? Because now we'll have students who are preparing for next year also. That's why I'm again talking about these things. What is a statutory body? Great, very good. So statutory body is the body which is formed as a result of a parliamentary law or they derive the power from there, है ना. So it was formed in 1973 after Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, जिसको आप शॉर्ट में वाटर एक्ट लिख सकते हो, ब्रैकेट वाले को स्किप भी कर सकते हो, है ना. Then it has been given power under Air Act also, Air Prevention and Control of Pollution Act. It means for both water pollution and air pollution, this organization was established, a statutory body, है ना. It serves as a field and also provides technical support provision of Environment Protection Act 1986 के अंदर भी इनके पास कुछ पावर्स हैं, ठीक है. A bureaucrat is the chairperson, है ना. Then we have board is led by chairperson appointed by appointment committee of cabinet, है ना. Appointment committee of cabinet again the same, prime minister and home minister इसमें होते. So this appointment committee of cabinet appoints all the top bureaucrats in the country. हाँ, statutory means made by the statute. Very good. Now let's talk about CAQM. तो एक 2021 में एक law bill आएगा which is actually now made an act. Like means it has been passed by both the houses. The president has given the approval. It has been notified in the gazette. That's called as Commission for Air Quality Management in the National Capital Region and adjoining areas 2021. So national capital region means Delhi and I think there are 24 districts. पहले हम देख लेते हैं कितना है. हाँ 24 districts plus Delhi. So ये पूरे देखो दिल्ली इतना सा है लेकिन इस पूरे region को national capital region कहा जा रहा है. देखो this is Delhi. And this is national capital region. So it includes places from Uttar Pradesh, from Haryana, and 2 districts of Rajasthan as well. So इसको पूरे को national capital region कहते हैं. I'm not saying NCT, national capital territory नहीं. फिर वो दिल्ली वाला हिस्सा सिर्फ हो जाएगा. National capital region. It includes Delhi and other 24 districts. उस region के लिए to fight pollution in this region, CAQM has been specifically designed or made, I would say. And again, it is also a statutory body. तो वही है इस लॉ से लाया गया CAQM लॉ. तो आप देखोगे पढ़ सकते हो दे हैव डिफाइंड हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी के रीजन के लिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड एनसीआर रीजन नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है. सो कंपोजिशन में दे हैव मेड कि एक चेयरपर्सन होंगे CAQM में, ठीक है. देन एन ऑफिसर ऑफ रैंक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ब्यूरोक्रेट होंगे सर्विंग फॉर और अ फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 इंडिपेंडेंट टेक्निकल मेंबर्स रहेंगे, 3 मेंबर्स फ्रॉम NGOs रहेंगे. सो ये सब बताया गया, इसमें इतना रटना नहीं है ना. और उनके कुछ मेंबर्स रहेंगे जैसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से रहेंगे, कुछ मेंबर्स रहेंगे, CPCB के रिप्रेजेंटेशन रहेगा, है ना. सो दीज आर द थिंग्स यू शुड नो, है ना. सिलेक्शन कमेटी होगी, इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि हाउ दे आर सिलेक्टेड द मेंबर्स और द ऑफिसर्स हु आर देयर इन CAQM, ठीक है. फंक्शंस इनका काम ये रहेगा कि कोऑर्डिनेशन एक्शन बाय कंसर्न स्टेट्स, दिल्ली पॉल्यूशन सेक्टर, प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग प्रिवेंट्स एयर पॉल्यूशन, ये सब. पावर्स ऑफ द कमीशन, रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एयर क्वालिटी, है ना. यही लोग GRAP लगाते हैं ना, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, व्हिच विल डिस्कस, ठीक है. रफ आइडिया होना चाहिए, एकदम लाइन बाय लाइन नहीं रखना है, बट यू शुड हैव अ रफ आइडिया ना. पेनल्टीज वगैरह लगा सकते हैं, दे कैन पनिश एन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द बिल्स एटसेट्रा. खैर, है ना. तो CAQM एक्ट 2021 से बनाए दिल्ली NCR और पंजाब हरियाणा रीजन के लिए, है ना. देयर मेन जॉब इज लाइक इंप्लीमेंट GRAPs, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान. ये पूछा था ना अभी रिसेंटली सम एग्जाम इट वाज आस्क्ड, है ना. तो CAQM reviews action taken to eliminate stubble burning, नवंबर की न्यूज है. देखो अभी मैं देख रहा था ये 13/12 यानी 13 दिसंबर का ऑर्डर है. दिस आई चेक्ड इन यस्टरडेज ऑन देयर वेबसाइट एंड दे टॉकिंग अबाउट स्टेज 4 सेवियर कैटेगरी GRAP ऑर्डर, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ठीक है. तो मतलब ये दिल्ली और सब रीजन में, इस रीजन में GRAP 4 की बात कर रहे हैं, है ना.
ये तो दिल्ली ये वाला रीजन है ना, तो इसको हम लिखेंगे ग्रेडेड, पूरा लिख देता हूं, रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है। हाँ ये रेट पूछा था जीआरएपी। अच्छा कुछ और चीज भी बताया गया है, जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये क्या है, जैसे मान लो आप इधर से आ रहे हो, लेट्स से यू आर कमिंग फ्रॉम जम्मू एंड यू हैव टू गो साउथ, तो लोग क्या कहते हैं, ऐसे ट्रक आ रही, बस आ रही है, वो दिल्ली से होके गुजरती थी, ओके। So they used to cross the Delhi. So now they have made a highways like this. चाहे इधर से निकल जाओ, avoid the Delhi or go like this. So the eastern one is called as Eastern Peripheral Expressway, and the western one is called as Western Peripheral Expressway. So that the big trucks and the trailers should not go to Delhi. Delhi काय को जाओगे भाई, साइड से निकल जाओ, तो ये बनाया गया है Eastern Peripheral Expressway and Western. समझ में? So that you should avoid if you are like driving a big truck, है ना, and you are not supposed to drop the products in Delhi. तो आप साइड से निकल जाओ, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रोविजन बनाया गया, या अगर बड़ी बड़ी ट्रक है तो आप यहीं पे सामान अनलोड कर दो, जो भी आपको करना है, छोटी छोटी कार से आ जाएगा, आप साइड से निकल जाओ, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज आल्सो द थिंग, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एंड वेस्टर्न। आई थिंक दे हैव बीन बिल्ट एज फार, ये तो बहुत पुराना न्यूज़ है, बट आई एम जस्ट सेइंग यू टू यू एंड एक्सप्लेनिंग इट। और आप देख सकते हो, है ना, डिकंजेस्ट करने के लिए ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, है ना। सो ये है जीआरएपी, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। स्टेज 1 पुअर एयर क्वालिटी, है ना, 200 से अगर 300 के बीच एक है, तब क्या क्या करना है ना। सो दे हैव पुट इट की पीयूसी 900 पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वगैरह चेक किया जाएगा, मैकेनाइज्ड रोड्स, डस्ट को, कंस्ट्रक्शन साइट में डस्ट को कंट्रोल किया जाएगा, ओपन वेस्ट बर्निंग को कंट्रोल किया जाएगा। जीआरएपी 2 यानी 301 से 400 AQI हो गया। सो और क्या क्या किया जाएगा, दीज आर द थिंग्स। यानी बैन ऑन डीजल जनरेटर्स कर दिया जाएगा, पार्किंग फीस बढ़ा दिया जाएगा, सो दैट पीपल विल अवॉइड टेकिंग द कार आउट, है ना। मान लो मॉल में पार्किंग फीस बढ़ा दिया जाएगा, तो लोग अवॉइड करेंगे कार से जाना, चलो टू व्हीलर्स चल लेते हैं, नहीं तो उससे चले जाएंगे मेट्रो से, नहीं तो पैदल चले जाएंगे या समथिंग, दे विल ट्राई टू रिमेन इनसाइड द हाउस, है ना। तो रेस्ट्रिक्शन ऑन कोल फायरवुड इंडस्ट्रीज, है ना, इनहांस पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह बढ़ाया जाए, ठीक है, बिकॉज प्राइवेट व्हीकल ज्यादा जगह छेकती है ना, दैट्स द आइडिया। स्टेज 4 में AQI 401 से 450 हो जाएगा, इमरजेंसी रिडक्शन। इसमें क्या है कि नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन एकदम फौरन बैन कर दिया जाएगा, कोई भी डिमोलिशन वगैरह को। There's a big board near my house stating trucks coming from Meerut Bagwan are not allowed. Yes, कृषि सचदेवा, वो अभी जीआरएपी आई थिंक 4 वगैरह लग गया है ना, इसीलिए सब रूल लगा दिया गया कि ट्रक्स को नहीं आने दिया जाएगा। यस, हाँ, क्लोजर ऑफ ब्रिक्स, है ना, BS3 BS4 वाले इंजन नहीं, गाड़ी नहीं अलाउड होगा, है ना। गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट इवन प्राइवेट ऑफिसर्स को भी कहा था कि वर्क फ्रॉम होम कर लो, ऑनलाइन मोड कर लो, पढ़ाई लिखाई स्कूल जितना भी मैक्सिमम कर सकते हो। जीआरएपी 4 अबव 450, है ना, उसमें क्या, कंप्लीट बैन ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, एंट्री ऑफ बैन ऑन ट्रक्स एक्सेप्ट एसेंशियल। देखो लिखा ना, यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम, है ना, कि ट्रक्स का एंट्री अलाउ नहीं किया जाएगा, सिर्फ वो जैसे मान लीजिए मिल्क वगैरह जा रहा है ना, तो या एकदम जो खाने की सामान है उसको छोड़ के बाकी सब चीज स्टॉप कर दिया जाएगा। और इवन स्कीम भी लाने की बात होती है ना, क्लोजर ऑफ स्कूल कॉलेजेस, वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, सब कुछ घर से कीजिए भाई, बाहर आने की जरूरत नहीं है ना। सो दीज आर द थिंग्स रिगार्डिंग स्टेज 4। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन। IQ एयर है एक स्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सो दे कम अप विद द इंडेक्स रिगार्डिंग पॉल्यूटेड सिटीज। सो दिस ईयर अकॉर्डिंग टू देम व्हिच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज, जो इस साल करंट अफेयर्स फॉलो किए उनको पता होगा, डिस्कस देयर। तंदूर भी बैन कर दी, हाँ शायद रोटी, तंदूरी रोटी बनाना बैन कर दी शायद, आई थिंक आई हैव हर्ड समथिंग लाइक दैट। कोई भी चीज से उस तरह की पॉल्यूशन, हाँ। बायरन हाट, वेरी गुड, हाँ, बायरन हाट असम मेघालय बॉर्डर पर है, वेरी गुड। सो IQ ये इंडिया का लेकिन नहीं है, अगेन वो जो हम दिखा रहे थे ना CPCB, ये इंडिया, दिस वाज एक्चुअली कहां चला गया वो, दिस वाज ऑफ कोर्स CPCB का डेटा ये सब, ठीक है। बट अभी ये दिखा रहे हैं IQ एयर वाला, हाँ, ये इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन नहीं, दिस इज अ सेपरेट, IQ एयर इज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन स्विट्जरलैंड एंड दे कम अप विद रैंकिंग्स। सो उन्होंने ये रैंकिंग निकाली, उसमें जो है ये बायरन हाट नंबर 1 पे। हाँ, जो NAQI आता है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो CPCB का, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, एंड दिस इज ऑफ कोर्स इंडियन बॉडी, है ना। सो ये सब आपको पता होना चाहिए। So this is all about today's class. I hope you have understood a lot of concepts. Now I'll be meeting you tomorrow at 3 p.m. Please subscribe to the channel, press the like button, share this video. Thank you everyone. Thank